ISSB या PMA का शौक है या इवन CSS की तैयारी कर रहे हैं या इवन वैसे भी रिसर्च कर सकते हैं, तो इसमें से एक दो टॉपिक एक है important till the last point. Let me repeat my question. if one will delay his important task so he will do another important task Basically lecture actually लेक्चर था लेकिन ग्रुप डिस्कशन भी लेकिन ग्रुप डिस्कशन हमने इन्वॉल्व इसलिए कर ली क्योंकि हम ओ यार स्लिप मुइद व्हाट शिट कैप्टनसी स्लिप नहीं करा किया मुइद ने अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे मुदस्सिर जर्नी टू PMA वाले व्लॉग्स नहीं आ रहे। सो इंटरव्यू मैंने पास कर दी थी जो आखिरी मेरा व्लॉग था इस टॉपिक पे, और उसके बाद चूंकि ISSB एक महीने 2 महीने बाद होती है सो मैंने ब्रेक दे दिया था। 10 दिन मैंने मज़े किए, गली क्रिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज ISSB की तैयारी स्टार्ट करेंगे और आज से मैंने वज़न भी कम करना है, सो थोड़ा कानों पे गुजारा हाल। मुझे लोग के घर जाएंगे, मैं और मीसम वहाँ पे ISSB की तैयारी स्टार्ट करेंगे, और जिसका ड्रीम है PMA ज्वाइन करने का वो हमारे साथ ये सीरीज़ देखते रहे, क्योंकि हम काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर करते हैं, ख़ासकर जो हमारे एक दोस्त है मुईद वो। सो ये जर्नी टू PMA में मिशन ISSB स्टार्ट हो गया हमारा। मैं और मीसम जाएंगे सदर में, सदर नहीं नादरा ऑफिस जाएंगे, मेरा शनाख्ती कार्ड आए, सबसे पहले शनाख्ती कार्ड उठाएंगे, वहाँ से फिर मुईद लोग के घर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चलिए चलते हैं। चलिए चलते हैं मीसम के पास, आप लोग के साथ डायरेक्ट मिलते हैं BRT के स्टेशन में। सबसे पहले नादरा से मेरा शनाख्ती कार्ड उठाते हैं, डायरेक्ट क्लिक होगा। नाश्ता किया नहीं, कुछ खाते हैं प्लीज़। सदर में आलू के चिप्स खिलाऊंगा ज़रूर ज़रूर, और फिर डायरेक्ट मुईद के घर ISSB की तैयारी। जर्नी टू PMA कंटिन्यू। BRT में आ गए और बस में बैठेंगे। One eternity later. We are in Muid street. मुईद 12:26 हो रहे हैं। मुझे तू बता कि ये 25 मिनट में तुम लोग कौन सा अमल कर रहे हो? मैं आपको एक बात करता हूँ, 25 मिनट में तुम लोग कौन सा अमल कर रहे ये बंदा हमें कल कहता है 5 मिनट में निकलता हूँ, 50 मिनट में निकला है। हो? वो तो ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन मुईद। आज हम करेंगे अपनी ISSB की तैयारी स्टार्ट। मैं तो PS5 Nothing is confidential. Oh yes, come on. Nothing is confidential. एवरीथिंग इज ये five कॉन्फिडेंशियल। को हमारा ISSB तैयारी को सही खबर होगा ना। ISSB तैयारी को ISSB तैयारी करते हैं। मुईद के पास PS5 भी है, अभी लिया कल लिया है, तो उस पर व्लॉग बनाएंगे और फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे किस तरह लिया है, किस तरह ली है, क्या क्या उसके पीछे मुशक्कत क्या मैंने तू ये। खैर अभी ISSB तैयारी कॉन्फिडेंशियल कोई चीज़ नहीं नहीं है है ना, प्रोहिबिट है, सब बातें बताएंगे। कॉन्फिडेंशियल। आपको खुद पता है ना ये चीजें कितनी कॉन्फिडेंशियल होती है। मुझे कल कमेंट आया ना कि कौन सी एकेडमी कर रहे हो YouTube पे, तो मैंने कहा था कि कर्नल साहब पूछ रहे हो कौन सी एकेडमी कर रहे हो। नहीं एकेडमी सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम। हाँ, टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम। सबने सुन लिया, मेरे खानदान वाले ने भी सुन लिया ना। हमने पेट से हमने कम करना है। अच्छा बस जूते उतार देना यार। मैं भी चाहता था कि ये बोलना था नीचे उतार। मुईद के घर वालों ने घर मुईद के हवाले किए हैं। इस PS5 के सामने हम ISSB की तैयारी कर पाएंगे? नहीं
اچھا میں آپ کو ایک سیکنڈ لائٹ آن کرتا ہوں. میرے ابو نے بڑی محنت کی ہے, کچھ ٹاپکس لکھے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. اور ٹاپکس تو خیر ہم کانفیڈینشیل نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ تو ویسے ہی ٹاپکس ہے نا, ایس ایس کے لیے تیاری کے لیے بندہ ٹاپکس کرتا ہے. لیکچر 8 ہے آج کل. جو ٹاپکس ہیں وہ تو خیر بڑی کامن ٹاپکس ہیں نا, اس میں سے 2-3 ٹاپکس کے میں نام لیتا ہوں جو کہ ہر بندہ اس کے اوپر ریسرچ تو کرنا چاہیے. ایک ہے جس کا بھی ایس ایس بی یا پی ایم اے کا شوق ہے یا ایون سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہے یا ایون ویسے بھی ریسرچ کر سکتے ہیں, تو اس میں سے 1-2 ٹاپک. ایک ہے پروکریسٹینیشن. پروکریسٹینیشن ایک ٹاپک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ unnecessary delaying an important task. تو جیسے یوتھ میں آج کل یہ بہت کامن ہے. اس کے علاوہ causes of economy downfall in پاکستان, یہ بھی بندے کو اسٹڈی کرنا چاہیے. یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ پہلے سے انگلش کورس کریں. یہ اس کا کیوں کلائمیٹ چینج کے بارے میں انسان کو اسٹڈی کرنا چاہیے. آج کل یہ جو COP28 ہوا تھا سمٹ جو UAE میں ہوا تھا, اس کے بارے میں بندہ اسٹڈی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہیومن رائٹس وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اسٹڈی کرنی چاہیے. تو یہ تو کامن چیزیں ہیں جو کہ ایون اگر بندہ پریپریشن کر بھی نہیں رہا سی ایس ایس کے لیے یا پی ایم اے کے لیے, ویسے بھی بندے کو ریسرچ بیسڈ انالیسس کرنا چاہیے. سو دیٹس اٹ. کین وی سٹ Of course. ہاں میں یار پہلے میں بولتے بیٹھ جاؤ ڈائریکٹ ٹاپک اپنا گھر ہے یار, اپنے گھر میں کیا بیٹھنا کیا. چلو بس PS5 لگاؤ. میں چائے بناتا ہوں. نہیں آج چائے نہ میں اپنے چائے بناتے ہمارے لیے بناؤ. بناتا ہوں. چائے مجھ نے تیار کری, لگتا ہے بسکٹ پلیٹ میں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے خیر. تھینک یو ویلکم. تو ناظرین اب ایس ایس بی کی تیاری اسٹارٹ کرتے ہیں. جی سب سے پہلے مجھے آپ لوگ کو اسٹارٹ سے سمجھائے گا, مطلب میں بیچ میں انٹرفیئر کروں گا کہ 4 دن کیا کیا ہوتے ہیں, پہلے دن سے لے کر 4 دن تک, مطلب ایونٹس اوپر سے سمجھائیں. ایونٹس جو ہیں دیز آر ناٹ کانفیڈینشیل کیونکہ یہ انہوں نے خود بھی بتایا اپنی ڈاکومنٹری میں. ہاں تو اگر میں بتا دیتا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہاں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس میں جو ہم دیں گے وہ ہم آبویسلی وہ نہیں شو کر سکتے. ایونٹس یہ ہوتے ہیں کہ 4 دن ہوتے ہیں. مجھے اب ایگزیکٹ سیکوینس آف ایونٹس یاد نہیں ہے, لیکن موٹا موٹا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ کون سی ایونٹس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ وہاں پہ. وہ یہ ہے کہ اس میں 3 ڈائمینشنز ہیں جو وہ خود بھی بتاتے ہیں. ایک سائیکولوجسٹ ڈائمینشن ہے, اس کو سائیک ڈائمینشن کہتے ہیں. ایک GTO ڈائمینشن ہے, جس کو گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ڈائمینشن کہتے ہیں. اور ایک ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ ڈائمینشن. تو یہ تینوں ڈائمینشنز ہیں. تینوں ڈائمینشنز میں جب آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں اور آپ کو منیمم 2 ریکمینڈ کر دیتے ہیں تو یو آر ریکمینڈیڈ فار پاکستان آرمی. 3 ریکمینڈ کر دیتے ہیں تو یو آر اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ فار پاکستان آرمی اینڈ اے ویری گڈ کنٹینڈر فار سلیکشن ان فائنل میرٹ. اب اس کے علاوہ جو سائیک کا ڈائمینشن ہے, سائیک کے ڈائمینشن میں آپ کے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کی سائیکولوجی جج کی جاتی ہے. اس میں سائیکولوجی جج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مختلف قسم کے ویٹ ٹیسٹ ہو گئے, ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ, اس کے علاوہ OPI اورل پروفیشنسی ٹیسٹ ہو گیا. ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ورڈ دیا جائے گا, اس کو ایسوسیٹ کر کے آپ نے ایک سینٹینس بنانا ہے جس سے اس ورڈ کا مطلب واضح ہو. اسٹوری رائٹنگ, پکچر اسٹوری ٹیلنگ, مطلب پکچر ایک بنائی جائے گی, دکھائی جائے وہ پروجیکٹر میں, آپ کو 2 منٹس یا 2 منٹس دکھائی جائے گی میرے خیال سے, اور 5 منٹس کے اندر آپ کو اس کے اوپر اسٹوری لکھنی ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کے میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ ہوگی جسے میٹ کہتے ہیں, میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, جس میں آپ کا فزکس ریلیٹڈ جتنا بھی مائنڈ ہے آپ کا, اور لاجیکل ریزننگ اور آپ کی پلاننگ ایبیلٹیز دیکھی جاتی ہے. تو یہ سائیکولوجسٹ کا ڈائمینشن. ہاں اس کے علاوہ سائیکولوجسٹ کا انٹرویو بھی ہوتا ہے میرے خیال سے. وہ پہلے تو سب کا لیا جاتا تھا, لیکن ابھی کچھ مخصوص کینڈیڈیٹس کا لیا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو وٹ از دا ریزن فار دیٹ. اور اس کے علاوہ اب آ گیا GTO ڈائمینشن, جسے گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ڈائمینشن کہتے ہیں. گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ڈائمینشن میں یہ ہے کہ آپ کے مختلف گروپ ٹاسک ہو گئے, گروپ ڈسکشن ہو گیا, آپ کا کمانڈ ٹاسک, پروگریسو گروپ ٹاسک, ہاف گروپ ٹاسک, انڈیویجول ٹاسک, یہ ساری جو ہیں یہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری وربل ایکٹیویٹیز ہیں, یعنی گروپ پلاننگ ہو گیا, ملٹری پلاننگ جسے کہتے ہیں, اور گروپ ڈسکشن ہو گیا. تو یہ وربل ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں ٹاپکس دیے جائیں گے اور اس میں اس کے ریلیٹڈ وہ ہم انشاءاللہ جج کریں گے.
फिर आगे हमारा डिप्टी प्रेसिडेंट डायमेंशन, जिसमें आपका लेक्चर रेट आता है. आई गेस लेक्चर रेट डिप्टी प्रेसिडेंट में आता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. लेक्चर रेट जो है डिप्टी प्रेसिडेंट्स के डायमेंशन में आता है, और उसमें यह है कि आपको टॉपिक दिया जाएगा. लेक्चर रेट का मतलब कि आपने उस पर बात करनी है, ठीक है. आपको एक टॉपिक भी दे सकते हैं, आपको मल्टीपल टॉपिक्स भी दे सकते हैं. तो आपको 5 मिनट 7 मिनट या जितने में वैलिड टाइम लगता है आप उसको कंप्लीट करके उनको पेश करें, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह. और उसके अलावा लेक्चर रेट के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू या डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू जिसे कहते हैं, तो वो होगा आपका. वो डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू लेता है, और वो इंशाल्लाह लास्ट ही होता है. गेस इट इज द लास्ट ऑफ द स्टेप्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू सम पीपल डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेकिन मेरे ख्याल से सारे एवरी अदर टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो बस इंशाल्लाह यही चीजें थी. इंशाल्लाह अगर मैं गलत हूं तो आप रिसर्च करके देख भी लेंगे जो करेक्ट चीजें, ठीक है. मोहित चाय पी ले, आप चाय पी के फिर गपशप लगाते हैं. A few moments later. मोहित क्या टॉपिक्स करें कि वो हम रेडी करें वो टॉपिक्स. हाँ, टॉपिक में लाता हूँ. लेक्चर ऐड करेंगे, मिसम 3 टॉपिक्स का लेक्चर ऐड करेगा, लेकिन समझा कोई लेना देना नहीं है. हाँ, टॉपिक नंबर 1 में पहले मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन का टॉपिक बड़ा पसंद है. टॉपिक नंबर 1 है प्रोक्रेस्टिनेशन एंड हाउ इट कैन बी ओवरकम ना. तो ये आप देख सकते हैं. Procrastination is a bad thing and we should avoid procrastination. We should do our work where on time. And रिसर्च उपयोग करना डाले माँ. I am absolute genius. अच्छा, दो 5 मिनट बात करो. क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, हाउ इट कैन बी ओवरकम. अच्छा, मैं इसको बताता हूँ कि इसमें बात किस बेस पे करनी है. पहले तो आपने प्रोक्रेस्टिनेशन डिफाइन करना है, ठीक है. एक चीज कहते किससे हैं इंग्लिश में. फिर प्रोक्रेस्टिनेशन की कॉजेस क्या है, ठीक है. कॉजेस क्या है, वजह, रीजन क्या है. फिर प्रोक्रेस्टिनेशन के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी बताने हैं, और कुछ प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी बतानी है, और यूथ में क्यों कॉमन है, ये 4 चीजें हमने बतानी है. So my topic is procrastination. Procrastination means to delay our important task. It's called procrastination, and it is common in youth because today's life is very busy. We engage ourselves in different activities on social media, or we waste our time to learn many ways of earning money like Amazon, etc. So our young youth, our juniors make themselves busy in such bekar activities that we do procrastination. We delay our important tasks, which is necessary for our living. And how we can overcome procrastination? By making a schedule. We should get up early in the morning. We should make a timetable for ourselves that we should do this task from 9 a.m. to 11 a.m. Then onwards we should do this task, and then we should do this task. We should give more time to our important tasks than our social media activities. So in this way we can overcome procrastination in a very good way. The effects of procrastination are that in Pakistan, if you see, many of our youth are jobless. This is because they have wasted their time. That's why they are jobless. And what are the benefits and productive side of procrastination? The benefits and productive side of procrastination is that we produce many people who think very broadly. They do such activities that can help us in future. Like they earn editing skills, they earn YouTube, etc. skills. No. Which are not important, but they can add a little value to their life, a value to our society. So yeah, that are the benefits of procrastination. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. No, one question. You are absolutely spot on till the last point. Let me repeat my question. The productive side. What is the productive side, and how can procrastination produce people with editing skills and co-curricular activities and creative minds? It has trapped me. How? Like if one will delay his important task, so he will do another important task. No, his point is absolutely Like if I right. am delaying my studies time,
So I will give that time to another No, important his point is task. absolutely right. There are two types of procrastination if some of the people don't know. One is passive procrastination and the other is active. Passive procrastination means that you are delaying a task without doing any other task. But active procrastination means you are delaying an important task and doing and investing your mind into some other task. He's right about it. He says that a person delays his important task. Suppose the task is to complete his homework or to complete any task of the office and submit it by tomorrow, but he invests his mind and takes time into some other task. So that is also one way of procrastination which can benefit our youth. But 99% of procrastination is wrong. It is non-beneficial. It affects us in a bad way. One should not procrastinate, and one should invest his mind into all the important activities that is due, because discipline is the key to success. One should be indulged into co-curricular activities as well, to play cricket, and also the studies and the discipline wise and the educational activities as well. So that's all. And I guess we have done very right job. Yes. Like without preparation, we talked round about 5, 6, 7 minutes about procrastination. So Yes. So Thumbs we up, are moving into let me the some right judge direction. our skills, our communication skill, our lecturate skills. It was very good. Can you came in front frame? Please get yourself ready. Please me some. Give us a review. Review 5 stars. 5 stars. 5 stars. Thank you very much. Thank you very much. So that Hand was wash. I want to wash my hands. ये हमारी प्रैक्टिस Go to थी kitchen. लेक्चरेट की नाइन मतलब This was group discussion. This was basically lecture it actually. Yeah, लेक्चरेट था लेकिन ग्रुप डिस्कशन भी लेकिन ग्रुप डिस्कशन हमने इन्वॉल्व इसलिए कर ली क्योंकि हम भी आपस में बात करते रहे ना, तो हमने इसको ग्रुप डिस्कशन में हमने इन्वॉल्व कर दिया. एक और टॉपिक करना है या नहीं यो बल अच्छा एक और टॉपिक. ग्रुप डिस्कशन टॉपिक नंबर 2 टॉपिक नंबर 2 इज, अच्छा इसमें लिखा है 3 C's, लेकिन मैंने जब डिस्कवर किया तो देयर आर 4 C's ABC वाले C's. 4 C's for the qualities of leadership. 4 C's that defines and that makes a quality leader. One is conviction. The other is courage. Sorry, let me go by sequence. One is conviction. The other is character. The third one is courage, and the fourth one is competence. कॉन्फिडेंस Competence means आप competition करते हो, आप compete करते हो. और So let me conviction का क्या मतलब है? repeat one. Conviction, character, courage and competence. मीनिंग्स बता दो सबकी. कन्विक्शन का मतलब ये है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो एक टारगेट की तरफ. योर बिलीफ इज स्ट्रॉन्ग, के फर्म बिलीफ हो कि यार मैंने ये करना है, दिस इज कन्विक्शन. ठीक है. उसके अलावा कैरेक्टर तो आपको सबको पता है कि, लेकिन मैं इसको ये कहता हूँ कि मॉरल एंड टेस्टेड हैबिट्स ऑफ लाइफ. सो कैरेक्टर इज द मॉरल एंड टेस्टेड हैबिट्स ऑफ लाइफ. नाउ व्हाट इज कॉम्पिटेंस? कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी to compete with others. This is competence. And courage is basically the innate ability to have power, and when you overcome fear, that is courage basically. तो ये चारों चीजें हैं, and these 4 things are correlated and interrelated and dependent upon each other. So we say that character flows from conviction, then competence flows from character, and then courage flows from competence. So these all are correlated. And by getting all these, so one can become a great leader. Yes, and out of all the 4 things, a leader, a person, a moral person who has moral and ethical values, he cannot compromise one thing. And what is that one thing? Character. Character indeed. अच्छा एक तीनों से एक है. Explain year 2023 in one word. One word and one word. 2023 adventurous. Learning. Full of learning. Full of learning. ये one word. one word नहीं है, full of One word. कौन दो बड़ा? In my opinion, it was unique. For me, it became unique in December because he bought PS5. Yes. It is all well that ends well. That ends well. Yeah, that's the quote of the day. So we will play PS5. PS5 पे चलते हैं. PS5 खेलते हैं. मोहित क्रिकेट. क्रिकेट गेम लगाओ. या फुटबॉल. ना फुटबॉल 2 जॉयस्टिक्स मांगते हैं ना. ना खैर. 2 कंट्रोलर्स. क्रिकेट पहले लगाता हूँ. It was a good lecturate group discussion.
cricket 19 मुईद कितने का लिया, कब लिया, किसने दिया? ये गिफ्ट है. It was a gift It was a gift from an unknown person. unknown person. कोई इस तरह गिफ्ट क्यों नहीं देता? मुईद अब पर्सन का बताओ वरना लोग गलत समझेंगे कि मुईद को इतना बड़ा गिफ्ट किसने दिया है? ये एक भाई ने दिया है. भाई है ये. हमें भी यार कोई इस तरह का भाई दे. हम PS5 और ये मुईद ने लिया GTA 6 के लिए, असल में लिया मुईद ने. हाँ, ये मैंने लिया. और GTA 6 में 2 साल है अभी. नहीं 2 साल नहीं, 1 साल होगा इंशाल्लाह. 2025 में निकलेगा अप्रैल में इसमें हम इंशाल्लाह. PMA में होंगे इंशाल्लाह. लेकिन इंशाल्लाह. जब 2 महीने की छुट्टी के लिए आएंगे तो 10 चूज करेंगे. वैसे मुझे GTA 6 खत्म करेगा. इंग्लैंड वन टॉस वेरी सॉफ्ट इन ग्रासी ये पिच. मॉर्गन है. ये गेम पुराना 19 वाला है, तो अभी इंशाल्लाह 24 के लिए अपग्रेड करूंगा, तो उसमें फिर बटलर और ये कैप्टन होंगे इंशाल्लाह. ले मिसम कह रहा है अभी मेरी मतलब की बात आई है. और नसवा से लोग क्या लगे थे ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, आपको पता लग गया होगा. दिस इज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसमें पाकिस्तान इंडिया से हारा था. अब हम देखते हैं कि ये अब कोशिश करते हैं. और ये मुईद कैच. ये टॉप एज एंड दैट्स गॉन. ओह व्हाट अ फील्डिंग यार, व्हाट अ फील्डिंग. शॉट रन पकड़ लो दे. और डबी वाले. बढ़िया शॉट. मार्क वुड को क्रिस लिन ने लेग साइड पे ग्लांस करके चौका मार दिया है. Usmachla, Osara Pasha, Butel Brina. Outschwe. And Australia is out of trouble. 138 runs. 12 ओवर में 138 रन है. 7 आउट है. और इसमें से कम से कम 100 मैंने की है. तकरीबन 50 मिस हमने किए होंगे. 60. वो ये कोच चक्का मुईद की तरफ से. 6 more. जब हमने वीडियो बंद की थी 20 पे 3 उठते मेरे ख्याल से. 20 पे 3 थे. हाँ, और तब से हमने इनको रेस्क्यू किया ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में. मिसम ने बड़ी खूबसूरत बैटिंग की. तो बाकी 4 विकेट गिरे इसमें, तो 3 मुईद ने आउट किए, बाकी 1 मैंने आउट किए. दे और के यार. और ये 9 आउट हो गए. 164 for 9. मुईद टारगेट कम लग रहा है. इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे इंशाल्लाह. मिसम ने 2 विकेट गंवा दी. कम है टारगेट थोड़ा सा. और ये तीसरी विकेट पे मिसम ने गंवा दी मेरे ख्याल से. और ये मिसम ने शिट बैटिंग की आखिर में. हैट्रिक. 165 टारगेट है और इंग्लैंड के लिए जीतने के लिए. हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे. हमने तो कहा था कि 200 तक बनाएंगे, लेकिन वो मिसम ने आखिर में इतनी आखिर गंदी में बैटिंग 3 की. विकेट. हाँ. 3 विकेट 3 बॉलर पे गंवा लेकिन दी. स्टिल वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग दिस इंशाल्लाह. चल मुईद अटैक और कर. A few moments later. ओ यार स्लिप. मुईद व्हाट शिट कैप्टनसी. स्लिप नहीं करा किया मुईद ने. और ये 2 चौके लग गए. सारा स्कोर खराब कर दिया. उन्हें तकरीबन 20-30 रन चाहिए. 26 रन. और ये मैच हम लोग हार गए. ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड में हमने हराया. पाकिस्तान नहीं हरा सकता, हमने हरा दिया उनके होम ग्राउंड. हमने उनको होम ग्राउंड में हरा दिया. इंग्लैंड वेरी वेल प्लेड मॉर्गन साहब को. ये PS5 मुबारक. खैर यहाँ पे अपना व्लॉग आज का एंड करते हैं. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ख्याल रखें अपना. सर्दी है, अपने आप को गर्म रखें. व्लॉग एंड करते हैं.